everybody, and a very warm welcome to the Dhamakedar, Farratedar and Mazdar session with me, Pritesh, your host, your dost, and a proud educator from Unacademy. So welcome guys, नमस्कार, आपण सगळ्यांचा फार फार हार्दिक स्वागत आहे. And first and foremost, a very big sorry for being late. तो आज सब कुछ गोंडोगोल गड़बड़ हो गई है because you know it's raining very heavily in Bangalore and I was not getting any mode of transport and finally I have reached office after paying 3 times to the auto guy and यहाँ पर आने के बाद थोड़ा स्टूडियो में glitches थे but then okay it's better late than never. So here we are with a brand new academic session called Shivneri batch for my grade 11th and 12th students, and today we are starting with grade 11, the very first chapter called the living world. So this particular chapter क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का, तो इसलिए ये चैप्टर हम 2 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे. Now let me tell you what the timeline and how the timeline is going to be. So I will be coming live 2 times in a day. ठीक है, तो हर रोज मैं दिन में 2 बार लाइव आऊंगा. Once it is going to be at 11, right? तो पहली बार I will be coming live at 11 a.m. which is going to be on Tuesday, Thursday and Saturday for grade 11. ठीक है, तो 11th standard के लिए I will be coming live 2 times, that is Tuesday, Thursday and Saturday. ठीक है, then so this is going to be for 11th. उसके बाद at 5 p.m. every day a short is going to get released which will have tips and tricks about what we have learned in the morning. Now, I want you guys to keep telling me in the comment section, to keep telling me in the chat if you're having any kind of other expectations. उसी के साथ साथ अगर आपको लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम है, if you want me to talk in Hindi or in English or in English or in Marathi, तर आपण प्लीज काहीही संकोच ठेवू नये आणि मला लगेच सांगावे चॅट मध्ये. ठीक है, so I'm quickly going to take all the names that is possible in the chat. I request the team to help me with the chat so that I can take all the names that is possible of my cute, sweet, मस्त मजेदार स्टुडोज. तर जसं अजय भैया आपल्याला लाला आणि लाली म्हणतात तसंच मी आपल्याला स्टुडोज हे नाव दिलं आहे. स्टुडोजचा अर्थ आहे स्टूडेंट प्लस किडोज, that is studos, right? So बहुत ही बेहतरीन ट्यूसडे आफ्टरनून है. Let us begin Living World Part 1. And guys, most important, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Share this video with your friends in school WhatsApp groups and subscribe to Unacademy महाराष्ट्र बोर्ड स्कॉलर्स because it is absolutely free आणि आपल्याला फ्रीच्या गोष्टी फारच आवडतात. तर please subscribe to the channel. So who all have we got in the chat? And that's amazing. We have got so many of them. And guys यार मतलब ना मुझे लैंग्वेज का बता दो because I am new to this region. So tell me कि आपको कौन सी लैंग्वेज से आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं. सो हाय प्रथम, हाय दर्शन, हाय विनोद, हाय मनीषा. राइट, सो वी हैव गॉट मनीषा पाटिल, सगळ्यांची वाट लावून टाकेल. राइट, अमेजिंगली ऑसम. एंड गाइस हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सा टेलीग्राम का ग्रुप है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए. राइट, सो लेट्स बिगिन. तो हमारे पास यहाँ पे बुक नहीं है. आय हॅव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. खूप जास्त वेळ घालवून मी हे सगळे स्लाइड्स प्रिपेयर केले आहेत. सो मेक श्योर दैट यू नो थोड़ा सा प्यार दिखा दो, है ना. चलिए इंग्लिश में बोले हिमांशु शुक्ला. बढ़िया, हिमांशु बोल रहे हैं इंग्लिश लेकिन दर्शन बोल रहे हैं मराठी. तो हम एक काम करेंगे, वील कीप अ मिक्सचर ऑफ ऑल. राइट, चलिए तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील बी स्टार्टिंग विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वी कवर ऑल द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. यश सूर्यवंशी अथर्व हे पण बोलत आहेत की मराठीमध्येच बोलावे. बर, तर आपण असं करू, आपण 70% मराठी ठेवू आणि 30% इंग्लिश हिंदी ठेवू. चालेल, तर हे सगळ्यांनाच एकदम व्यवस्थित होऊन जाईल. तर व्हेन आय टॉक अबाउट बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ, इथे आपण एक जीवित आणि एक अजीवित कॉम्पोनेंट मध्ये किंवा एक जीवित आणि अजीवित ऑर्गॅनिझम मध्ये काय अंतर आहे, का आपण एक जीवित कॉम्पोनेंटला जीवित असं म्हणतो आणि आपण काय एक अजीवित कॉम्पोनेंटला अजीवित असं म्हणतो, हे आपण इथे बघणार आहोत. तर बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ विल हेल्प अस टू डिफरन्शिएट बिटवीन द लिव्हिंग अँड द नॉन लिव्हिंग, बिटवीन द बायोटिक अँड द एबायोटिक. नाउ हियर व्हेरी important question I would like to ask you, that we know that in an ecosystem, this is the basic, that we have got biotic and abiotic. Now over here bio means life, right?
तो ये ए बायो में से भी ये जो बायो होगा इसका मतलब होगा लाइफ. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन ए बायोटिक? हे जे ए बायोटिक शब्द आहे ह्याच्यामध्ये हे ए हा जो अल्फाबेट आहे ह्याचा अर्थ काय आहे, है ना? डबल येतोय आवाज. सो आय थिंक या वन माइक वी नीड टू स्विच इट ऑफ. The voice is double. The students are saying the voice is double. So I think we need to switch off one mic out of the two. Okay, प्रथम thank you so much सांगितल्याबद्दल मंडळ आभारी आहे. Right? चला. तर now you tell me that what is the meaning of this A in A biotic? Everybody quickly चलो. Quickly help me to understand. What is the meaning of A in A biotic? उसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर द चैट. ओके, आणि बॅकग्राऊंडचा थोडा व्हॉइस येतोय. बरं ठीक आहे, ते सगळं आपण आता व्यवस्थित केलं आहे प्रथम. आय होप आता आपल्याला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सो द ए स्टँड्स फॉर ॲब्सेन्स of life, right? Now guys, let me tell you one thing, that this chapter, ठीक है, thank you Pratham, this chapter living world, it is so easy, but you will be so surprised कि इसमें से कितने twist turn कर के CET में questions पूछे गए हैं. ठीक है, there are so many questions that have been asked in the CET and in the NEET based on only these three topics. बेसिक प्रिंसिपल्स, हर्बेरियम एंड बोटैनिकल गार्डन, इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बट दे वर नॉट वेरी सिंपल क्वेश्चंस. इतना उन्होंने ट्विस्ट किया है, इतना उन्होंने टर्न किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स? Which of the following characteristics do not differentiate between the living and the non-living? So there has been a lot of complicated language that has been involved in asking the questions. लेकिन फिकर नको. Why fear when I am here? So we are also going to solve some questions. So I want you guys to stay attentive because class के end में there are 5 very interesting MCQs which we will solve together. Right? तो पहला होगा basic principles of life. दो दूसरा टॉपिक है that is herbarium. Now as you can see herb, the word herb stands for plants. So when I'm talking about herbarium, here we'll be dealing with plants. And then comes botanical gardens. You know that botany is the plant study. ठीक है, botany is the plant study. So botanical gardens are also taxonomical aids which deal with plants. Right? So we will be ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಲ್. 1 2 3 4 5 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕನ್ನಡ. Can you please tell me what is biotic and abiotic? Okay, Pratham, very good question. So biotic are the living components of the ecosystem. Abiotic are the non-living components of the ecosystem. An interrelationship between the biotic and the abiotic forms the ecosystem. How will you define ecosystem? How will you define ecosystem? Ecosystem is the relationship between the biotic components, that is plants, animals, microorganisms, and between the abiotic components, that is rocks, minerals, soil, air, water, sunlight, temperature, humidity, etc. ठीक है, so biotic के अंदर प्रथम we have got only 3 examples. Biotic के अंदर we have got your plants, your animals, and your microbes. ठीक है, these are the 3 examples of the biotic components. प्रथम क्रिस्टल क्लियर आहे की नाही लगेच सांगायचं चॅट मध्ये मला. ठीक है, चलिए. तो now let us go a little deep into the topics. Let us explore what are the basic principles, herbarium and botanical gardens. ठीक है, very good प्रथम, super. चला आता पुढे जायचं आपण. Let us understand the chapter wise marks distribution of this chapter. So now this chapter, the living world, will come for 2 marks, but with option the chapter will be for 3 marks. This is I'm talking about your grade 11 ka final exam. But before we start with the final exam, I want all of you, Manisha Patel, Vatlaun Takil, quickly tell me that where are you from? Like I am from Nashik. I'm a proud Nashikkar.
How many of you are here from Nasik and how many of you come from different regions of Maharashtra? Please tell me in the comment section, chat section quickly that where are you guys from? Where are you guys from? Vinod, the next chapter that we'll be doing the systemic classification, there we'll be understanding what is a kingdom, family, genus, order, species, everything. Pura. And Vinod Varade, I will be also telling you a very instant shortcut to remember the kingdom, phylum, family, class, ऑर्डर, जीनस स्पीशीज. तो इसका मैं आपको एक बहुत ही मजेदार शॉर्टकट भी बताने वाला हूं विनोद. सो दैट्स वाई इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. अरे वाह एरोली. मनीषा, I was living in Enroll for a very brief period of time. Somebody whom I know was living there. So it's a beautiful place. I was in, I don't remember the sector, but yeah, I was there. So Tausif is from Nanded. There's a very amazing Gurudwara there. Ahmednagar, Darshan. I have never been, but I have many relatives from there. Pramod, kya baat hai? Nagpur ki orange barfi. It's amazingly awesome. And Pratham, you're from Solapur. I've crossed Solapur when I was going to Akkalkot. Yeah, so that's amazing. Very nice. Hi Mahesh Yadav, where are you from Mahesh? आप कहाँ से? So again coming back, the chapter is going to be for 2 marks without option and for 3 marks with option. Now let us start with the basic principles of life. So any living organism needs energy. Why do you need energy? Energy is पुणे आमची पुणे. क्या बात है? Very good. You are from. Hello Tejaswini. Hello. जलगांव का तो सोना बहुत फेमस है विनोद. सोना कितना सोना है, right? चलिए. So all living organisms need energy. Now first and foremost, why do organisms need energy? So the question comes that why is energy needed, right? Energy is needed for growth and for repair, right? Energy is needed for growth and repair. Okay. Now Tejaswini, you're from Mumbai. That's amazing. Now when I talk about energy and growth, there are 2 main processes going on in the human body or in the body of any living organism, and those are your metabolic processes, right? And when I talk about metabolic processes, they are from 2 different categories. One is the anabolic and one is the catabolic. अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? So कैटाबॉलिक यानी कि कट. सो कैटाबॉलिक में क्या होता है? कैटाबॉलिक में द लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, राइट? सो कैटाबॉलिक को वील बी रिमेंबरिंग एज कट. तो यहां पर बना देंगे एक कैंची, राइट? सो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हेल्प टू कट, दे हेल्प टू ब्रेक डाउन larger molecules into smaller ones. Can you guys quickly tell me that can you guys quickly give me an example of catabolic processes? Very quick. Quickly give me an example of catabolic processes. चलिए, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में देना है हमको. Yes, you are right, Mahesh from Vasai, but can you give me an example of a catabolic process going on in the body? Quickly, can you give me an example? जल्दी लगाओ हल्दी और मुझे जवाब दो. चलिए, quick, very quick. Any example of a process, quickly. Oh, you're from Amravati. That's amazing. Thank you, Tejaswini, Komal. Quickly give me an example of catabolism. Yes, fast. Come, अरे मतलब दुनिया ना 5G पे पहुंच गई है, लेकिन आप लोग अभी तक 1G पे हो. तो जल्दी अपना 1G को 5G बनाओ. Okay, Pratham, I'll explain you again. Now, there are 2 processes that happen in the human body. One process will break down the larger molecules into smaller molecules, and one process will take those smaller molecules and make a larger molecule, right? For example, when you are making Maggi, what do? You break the Maggi and you put it in water. So this breaking is cutting, catabolism. And you cook Maggi to make a dish, that is anabolism. So your digestion is an example of catabolism because you are breaking down. What is digestion? How do you define digestion? Digestion is the process of breakdown of food to release energy in the body. So whenever catabolism happens,
whenever catabolism happens, energy is released, and the same energy is then used to build molecules. Right? The same energy is used to build molecules. Definitely, Chetan, paper pattern bhi jaldi aa raha hai. So, in anabolism, smaller molecules assemble into larger ones. Now, we all know the process of digestion or the process of nutrition. What happens? Digestion, absorption, assimilation. What is assimilation? Assimilation is nothing but anabolism. The building of muscles, the building of certain large molecules in the body is anabolism. So your catabolism plus anabolism together make metabolism. Right? So they say, na, what is your BMI, basal metabolic index? Right? Or what is your BMR, the basic metabolic rate, which means at what rate your body makes and breaks molecules is your BMI and BMR. ठीक है? At what rate your body makes and breaks the molecules decides the functioning of your body. And for this making and breaking, we need energy. So one of the basic principles of life or of living organism is that all of them need energy. Clear? Not clear? Tell me in the chat quickly. Chaliye. Quick. Clear or unclear? Jaldi se. Production of cells will be your anabolism. Photosynthesis. Again, in photosynthesis, what you are doing? In photosynthesis, you are making. Photosynthesis is a metabolic process in which there is happening both breaking down and making. So, making of food will be anabolism. Breaking down the sunlight, breaking down photolysis of water. In photosynthesis, क्या होता है महेश? Photosynthesis में the water molecule, that is H2O, it splits to form H and O. So, this is photolysis of water. It is catabolism. ठीक है सर टाइम टेबल फॉर मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास इज गोइंग टू अगेन हैपन एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एट I'll come at 12. हाँ सॉरी मैंने वो गलत बता दिया स्टार्टिंग में. I'll come at 12 and अजय भैया will come at 11. So I'll be coming at 12 o'clock and अजय भैया will be coming at 11 o'clock. ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So we know one that they need energy. Second is that all living organisms undergo growth. Right? A baby, आप भी थे ना, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं. अनिल, नेक्स्ट क्लास ऑफ 11th स्टैंडर्ड विल बी डे आफ्टर टुमारो एट 12 o'clock. फॉर 12th स्टैंडर्ड इट विल बी टुमारो एट 12. ठीक है. सो हम सब थे नन्ना मुन्ना राही, देश का सिपाही. तो वो जो नन्ना मुन्ना राही था वो बन गया है सिपाही. राइट? द प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अ सीड इनटू अ into a tree or a shrub or a bush or a herb, whatever. So growth is again a very very fundamental characteristic of living organisms. आप बोलोगे सर पर वो जो there are these water absorbing pebbles, उनको आप पानी में डालो तो वो भी ग्रो होते हैं. तो सर वो भी तो ग्रो हो रहे हैं सर, पर मतलब कैसे सर, कैसे? तो let me tell you one thing, that when we are discussing these basic principles of life, it is not only one, it is all of them combined. Right? Now, even a vehicle, even a car or a bus or a truck needs energy to run. That doesn't mean it is a living organism. Right? Because even though they are taking energy, they are not growing. And even if they are growing, they are not stopping to grow. Right? All organisms stop to grow after a certain time. So, when an organism is undergoing growth, only till the time it achieves a certain level, it will grow. Like they say, humans, they stop their physical growth, जो length, आपका जो height है, it stops growing after the age of 18 or 20. उसके बाद क्या होता है? Does your body stop to grow lengthwise? Yes, it does stop to grow lengthwise. But there is constant cell division happening in the body. Like today I'm 28. Does it mean that I have stopped growing? I have stopped growing on the length level. But I can always build up my body. The cell division is constantly happening in my body. Do you know की प्रत्येक 5 ते 6 तासाला काही ना काही प्रकाराचे सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये मरत असतात आणि नवीन जन्म घेत असतात. So there are every few hours in which the cells are dying and again forming in the body. Right? So there is growth that is constantly happening. When a tree has grown or achieved a certain height, does it mean that the tree has stopped growing? It has stopped growing in the length, but the tree is having new leaves. Every year the leaves will fall and new leaves will grow. New branches will come out. Right? But after a certain time, the visible growth stops.
So that is one of the fundamental characteristic of living organisms. ठीक है? Then the next one. तो next characteristic है हमारे पास that all living organisms reproduce. Can you tell me the two different ways of reproduction? Can you tell me the two different ways of reproduction? चलिए, can you tell me the two different ways of reproduction? Anybody in the chat? महेश, प्रमोद, मनीषा, तौसिफ, कोमल, तेजस्विनी, दर्शन और जो बाकी जिनको नाम चाहिए वो एक्टिव होना है उन्हें भी चैट में. क्विक 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 फेवी क्विक. और भैया जी लाइक किया या नहीं किया वीडियो को अभी तक? जल्दी बताइए. Can you tell me the two ways of reproduction? What are the two different modes of reproduction? Quick, quick, very quick. जल्दी से चलिए. Quick, quick, quickly tell me. Quickly tell me the two different ways of reproduction. Quick guys, quickly. I'm waiting in the chat. I'm waiting for you guys to respond. Are you there? झोपले का? उठा उठा. सकाळ झाली. चला लवकर. Okay, so the two modes of reproduction are asexual and sexual. ठीक है? Reproduction in detail you will be learning in your grade 12. ठीक है? But then those who are preparing for NEET or those who are preparing for CET, I want you guys to join my 12th standard classes also and learn. ठीक है? Very good, Kajal. Manisha, what you are saying are examples of asexual reproduction, right? And that too, what you are saying, it's vegetative propagation. ठीक है? But Kajal, you have given the correct answer. That is asexual and sexual. Now, under sexual reproduction also, we have got oviparous, we have got viviparous, and we have got an exceptional, that is oviviparous, which is seen in duck-billed platypus. Now, oviviparous mode of reproduction means the ande ka fanda, the egg-laying animals. The viviparous means directly birth giving. ठीक है? And oviviparous is an exception which we see in duck-billed platypus. ठीक है? When I talk about asexual mode of reproduction, this can be, thank you so much, fun and fact with bio. Dhanyavad. Right? Now, when I talk about asexual mode of reproduction, here we have got, as Manisha told us, we have got budding, fragmentation, grafting, tissue culture, right? Then external fertilization, etc. etc. Right? Chemistry and math का भी आपको timing जल्दी बताया जाएगा हिमांशु. चिल माड़ी. Right? चलिए. Now, all living organisms reproduce. Why? क्यों? मतलब क्यों करना है? Now, if you have watched the movie Lucy, very interesting movie based on a drug called CPH4. Right? If you have watched this movie Lucy, in that Lucy, there is this professor who says a very interesting line, and that line is so good की ते आतापर्यंत माझ्या लक्षात आहे. The professor says that all the living organisms in this world have only two purposes. One is survive. All living organisms will try their best to survive. They'll bring evolution in their selves. They will bring adaptations. They will do something or the other. They will bring some kind of changes. सर्दी म्हणजे जेव्हा थंडी वाढेल तेव्हा स्वेटर घालू, जेव्हा गरमी वाढेल तेव्हा पंखा लावू. We will do anything in our capacity to survive. What does a polar bear do? It has so much of fur. Why? To survive. What does a porcupine do? It has spines, it has spikes. Why? To survive from the predators. So every living organism will survive, and when it is not able to survive, to continue the species, it will procreate, which means it will reproduce. तो प्रत्येक living organism किंवा प्रत्येक जीवित जो जंतू असतो किंवा जो ऑर्गॅनिझम असतो त्याचे दोनच एम्स असतात, एक सर्वाइव आणि दुसरं रिप्रोड्यूस किंवा प्रोक्रिएट. Right? So that is why every living organism reproduces to maintain the population, to maintain the species. Because if reproduction does not take place, the entire ecosystem will get disturbed.
फॉर एक्झाम्पल वन डे इफ एव्हरी क्रो डिसाइड्स की बस आत्ता बस झालं, आजपासून आपण अंडी घालायचे नाही, we will not reproduce, we will not lay eggs, what will happen? After some years all the crows will finish, there will be no crows in the world, but it will not affect us directly, but it will indirectly disturb the entire food chain, then the entire food web, then the entire ecosystem, and the effect will घूम घूम के come to us. Right? So every living organism is an important part of the ecosystem and it has to remain, and to remain it carries out the process of reproduction. कळले का? सांगावे chat मध्ये. Did you get it? Did you get it? चलिए. Did you get it? Quickly tell me in the chat. Quick guys, we have to finish a lot. आज बहुत कुछ कवर करना है. Perfect. छान मस्त दर्शन. चला. तो we understood that all living organisms need energy. All living organisms grow. All living organisms stop to grow after certain time. All living organisms reproduce, and we also see that all living organisms die. Once the capacity to carry out metabolism is over, once the capacity to carry out metabolism is over, the living organism will die. है ना? So whether it is a rat or a cat or a bat or a human, once the capacity to create molecules or to break down molecules is over, the living organism will die. और देखो बच्चा पार्टी, if you are enjoying my teaching, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, if you are liking the way I am teaching you and explaining you guys, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. सबको बोलो कि पता है मार्केट में एक नया टीचर आया है एकदम बढ़िया, तो आइए उनके वीडियोस देखते हैं एंड शेयर इट. है ना? मतलब उतना तो यू कैन डू इट फॉर मी, राइट? चलिए, वेरी गुड अनिल. सो नाउ वंस द कैपेसिटी to metabolize is over, once the capacity to consume energy is over, the organism will die. ठीक है? This is a very very potential give reason that can come in the exam कि why do organisms die? So this is a very very important give reason that can come in your exam. Super important. So why do organisms die? They die when the capacity to carry out metabolism and metabolic activities is over. Right? Metabolism process, capacity, lose body, organ die. Very good Mahesh. Very good. Hi Gayatri Zadhav. Hello. Right? चलिए, लाइफ इज वन. हाय अमृता. हेलो अमृता, वेयर आर यू फ्रॉम? गायत्री आप कहाँ से हैं? जल्दी से बताइए चैट में. ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन. इट कैन कम इन द एग्जाम एज अ गिव रीजन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई. एक्सप्लेन या जस्टिफाई द स्टेटमेंट या गिव रीजन. है ना? देखो बच्चों, योर टेक्स्ट बुक इज द बाइबल. ये बाइबल है, ये गीता है, ये वो बुक है जो हर एक स्टूडेंट को, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको एग्रीकल्चर में जाना है, जिसको फार्मेसी में जाना है, दैट चाइल्ड हैज टू यू नो लाइक इतना पढ़ो सीईटी को, इतना पढ़ो सीईटी को कि अगर कभी कहीं कल गिर गए खेलते खेलते या बॉडी में से खून आए ना, तो खून नहीं, सीईटी की मतलब आपके टेक्स्ट बुक की लाइंस निकलनी चाहिए. इतना घोट के पीना है आपको अपने टेक्स्ट बुक को. सो रोज टेक्स्ट बुक को तो पढ़ना ही पढ़ना है. इतना पढ़ो दैट टुमारो इफ आई टेल यू दैट where is the image of this particular plant, you should tell me sir it is in page number this. इतना पढ़ना है. ठीक आहे? दररोज गायत्री दररोज लेक्चर्स होतील. फक्त आपल्याला प्रामाणिकपणे वेळेवर लेक्चरला यायचं आहे आणि आपल्याला प्रामाणिकपणे या लेक्चरला आपल्या मित्रमंडळींसोबत शेअर करायचं आहे. कळले का? चला, लेट्स गो ahead. So all living organisms die and all living organisms respond to stimuli. Whether it is it is response to any kind of heat,
it is response to the cold, it is response to the pressure, it is response to the temperature. Every living organism will respond to the stimuli in some way or the other. We know the different tropic movements, that is hydrotropism, chemotropism, geotropism, phototropism. What is this? It is a growth movement. It is a response to the stimulus. When you touch Lazaru, mimosa or mimosa pudica, it will just close itself. Response to stimulus. A plant starts moving towards light. Response to stimulus. Whenever हम दोपहर को 12 बजे ध्यान से बैठ के प्रीतेश सर का क्लास देख रहे हैं और आके फ्रेंड ने पेन चुबा दिया, बजा के देंगे. What is that? Response to stimulus, dude. Yo, bro. Right? So, response to stimulus is the reaction of a living organism when there is a change in the environment. If you are watching this class, there is a certain environment. There is an interaction between the screen and you. And if somebody disturbs the environment, you will respond. Right? Similarly, when there is extreme cold, the organisms, there are certain organisms, the cold-blooded animals, they undergo hibernation. When there is extreme heat, there are cold-blooded animals who undergo estivation. When there is rainfall, you open the umbrella. When there is winters, you wear the sweater. And when there is summer, you will be like, गर्मी है बॉस, कुछ तो करना पडेगा. ठीक आहे सर, PCMB सोबत ऑप्शनल सब्जेक्ट आहेत, त्याचे पण लेक्चर होतील का? टेल मी व्हॉट सब्जेक्ट अँड आय अरेंज फॉर यू. गायत्री, डन. जो आप बोलो वो. ठीक है. सो now what has happened, guys? We have understood all the six basic principles of life. All the living organisms on the earth, they follow these principles. They grow, they require energy, they respond to stimuli, they reproduce, they stop growing, they die. But who all does it? Every living organism does it. How many living organisms are there? So there is a very interesting chapter in your grade 12 called biodiversity and conservation. And that is in the NCERT. In that chapter, you get to know that there are more than 7 million species on the planet. And these species are so many that by the time you start recording them, there will be so many of them who have already gone extinct. आपल्याला माहिती आहे का, हाय तेजस चव्हाण, आपल्याला माहिती आहे का की आपल्याला आपल्या समुद्रांबद्दल फक्त 5% नॉलेज आहे. Which means we have explored only 5% of the oceans. यानी कि 95% oceans अभी तक unexplored हैं. Imagine वहां पर कितनी सारी species होंगी. Amazon rainforest, which is called as the lungs of the earth, Amazon rainforest भी अभी तक पूरा हमने explore नहीं किया है. और few years back when there was an Amazon rainforest fire, so many of trees, which means so many of ecosystems have just vanished. So, it is very important that we start recording all the species as fast as possible. We start maintaining a record of them, and that is when we'll be able to study them. And for this reason, we have got something that is called as taxonomical aids. What have we got? Something called as taxonomical aids. How will you define a taxonomical aid? How will you? Sir, I'm not able to join Ajay Bhaiya lecture at 11 AM. Please try to change it. Okay, Shrikant Patil. We will take this into consideration. But Shrikant, you can anyways, always like you can see the recorded lecture, right? Because it's on YouTube, so you can see it anytime. Okay? Now, thermal, chemical, biological change in surrounding. Yes, Mahesh, you are absolutely right. Now, how will you define a taxonomical aid? Aid का मतलब क्या है? Aid का मतलब है help. Taxa means the different organisms or the different species. Nomical means nomenclature, naming. So, what is a taxonomical aid? It is a helpful tool to name different species. देखो गाइज, बायोलॉजी, हम सबको पता है कि जो बायोलॉजी है वो एक बहुत ही ज़्यादा theoretical subject है. And when it comes to a theoretical subject, we have to memorize a lot of things. And I'll give you a very interesting tip to memorize it. That is, understand the meaning.
जब आपने किसी शब्द का मतलब समझ लिया तो उसको याद करना बहुत ईजी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब निकाला। एड का मतलब होता है हेल्प। जैसे हमें महेश ने बताया, महेश ने क्या बताया, टेक्सॉन का मतलब हो गया ग्रुप, राइट, और नॉमिकल, नॉमिन यानी कि नेमिंग। सो टैक्सोनॉमिकल एड क्या होगा, इट इज अ हेल्पफुल टूल टू नेम डिफरेंट स्पीशीज और ग्रुप, दैट इज टैक्सोनॉमिकल ये क्या बोलते एड। सर तुमचे खूप खूप धन्यवाद, कारण फक्त तुम्हीच आहात जे महाराष्ट्र मुलांसाठी इतके काही करताय आणि ते पण फक्त मुलांना शिक्षण सोपं होण्यासाठी। मंडळ आपले आभारी आहेत गायत्री, तुमचे खूप खूप धन्यवाद, एवढे चांगले मस्त शब्द आपण बोलले आहोत। थैंक यू, यू मेड माय डे, राइट। चलिए, even Tausif has helped us to understand that the branch of science dealing with study of principle and procedures of classification, again Tausif, that is what I am saying, classify करना मतलब क्या, classify करना मतलब categorize करना, क्लासीफाई करना मतलब उनको बाइफर्केट करना, कि अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है तो इसमें से प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। अगर मैं प्लांट्स की भी बात करूं तो प्लांट्स में से हर्ब्स कितने हैं, श्रब्स कितने हैं, ट्रीज कितने हैं, बुशेस कितने हैं, उसमें से फिर आएगा फ्लावरिंग कितने हैं, नॉन फ्लावरिंग कितने हैं, नेकेड सीड वाले कितने हैं, क्लोज सीड वाले कितने हैं, राइट। एनिमल्स में से फिर मेरे पास आएगा 4 लेगेड कितने हैं, 2 लेगेड कितने हैं, ओवी पैरस कितने हैं, वीवी पैरस कितने हैं, ओवीवी पैरस कितने हैं, कोल्ड ब्लडेड कितने हैं, वार्म ब्लडेड कितने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से यूनिसेल्युलर कौन सा है, मल्टी सेल्युलर कौन सा है। So that is the classification, and why we do classification, we do classification so that we can understand them better, है ना। अब जब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जब हमें शॉपिंग करना है, ठीक है, तो हम क्या डू वी डू दैट कि एक ही दिन पे हम फर्नीचर भी शॉप कर लेंगे, कपड़े भी शॉपिंग कर लेंगे, राशन भी शॉपिंग कर लेंगे, मतलब खाना भी खाने चले जाएंगे, एवरीथिंग वी डोंट डू ऑन वन डे। What we do that today, if we are going to the mall, let us focus only on the groceries. Today, if we are going for garment shopping, let us do only the garment shopping. Tomorrow, if we are going to buy furniture, let us focus only on furniture. है ना। जब हम फर्नीचर भी, अगर हम घर का फर्नीचर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले बेडरूम डिजाइन कर लेंगे, फिर हॉल पे जाएंगे। वाई डू वी डू वन स्टेप एट अ टाइम। यू नो, देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेज दैट बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स का मतलब क्या, धीरे धीरे एक टाइम पे एक ही स्टेप लो, right? So similarly, we categorize the organisms so that we can understand them better. If you give me 3 seedless, 3 flowering plants, 4 non-flowering plants, 3 4-legged animals, 4 oviviparous animals, you give me 8 unicellular microorganisms, 2 multicellular microorganisms, how will I study? So I have to categorize them, I have to bifurcate them so that I can study them, make my notes and then submit, right? So classification of organisms is necessary so that we can understand their characteristics, so that we can do a detailed analysis and so that we can do a research on that particular organism. ठीक है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता सर, बिल्कुल सही तेजस्विनी, है ना। इसलिए we need a classification, that is why we need a detailed classification, and to do that classification we have something called as taxonomic aids. So let us look at what are the different taxonomic aids. So the different taxonomic aids include your herbarium, botanical garden, your zoological parks, your museum and the different keys. ठीक है, so what are the different taxonomic aids? So we have got the herbarium, ठीक है, हो गया herbarium आपका first one. Botanical gardens, these two we'll be covering today. Remaining your museum, zoological parks and the keys we will be covering on Thursday. ठीक है, गॉट इट। सर क्या नीट का पेपर स्टेट वाइज चेंज हो गया आता है, या जैसे जो पेपर में होता है नीट का महाराष्ट्र में होगा, क्या प्लीज रिप्लाई कीजिए। महेश, नीट इज द ऑल इंडिया लेवल एग्जाम। सो नीट का पेपर ऑल इंडिया में सेम होगा, उसमें सेट्स होते हैं, बट देन ऑल इंडिया इट विल बी द सेम। बट जो आपका सीईटी है दैट इज ओनली केटरिंग टू महाराष्ट्र।
So Mahesh, if you want to take admission only in Maharashtra medical colleges, then you must follow your Maharashtra textbook. But if you want to take admission in an all India level college, like say if you are aiming for AIIMS, then you must target the NEET. But let me also tell you that there is not much difference between NEET syllabus and the CET syllabus. NEET syllabus is a little more vast, but the topics are more or less the same. And what I am trying to do, Mahesh, over here is कि I am trying to accommodate as much as possible. तो जब मैं आपके साथ कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम नॉट लिमिटिंग ओनली टू योर टेक्स्ट बुक, आई एम गोइंग इवन बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. तो यहाँ पर भी आपका काफी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगा. सर चॅप्टर संपल्यावर एमसीक्यूची प्रॅक्टिस पण घेणार. अरे वा गायत्री, मस्त. ऑब्व्हियसली आय हॅव पुट एमसीक्यूज. हे बघ, जे मी विचार केलं ते आपण बोलले आहोत. मने वसे ते स्वप्नी दिसे. व्हेरी नाइस. ठीक है, चलिए. सो टुडे विल बी कवरिंग योर हर्बेरियम एंड द बोटॅनिकल गार्डन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ हर्बेरियम. द टर्म हर्बेरियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट गाइज. ये सारे नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. सो द वर्ड हर्बेरियम वॉज कॉइन्ड बाय पिटॉन दी टॉर्नेफॉर्ट in his book Elements. Piton de Tournefort in his book Elements. ठीक है? The art of herbarium was initiated by the Italian taxonomist Luisa Ghini, who was alive from 1490 to 1556. ये भले आप याद मत रखो, you have to remember this name and you have to remember this name and this book also, Elements. So the term herbarium was coined by, sir, it means that it is grouping organisms and convenient on the basis of easily. very good Tausif. And guys, this is a very good habit. हे आपली खूपच छान सवय आहे. If whatever you are understanding, you are putting in the chat. क्यों? क्योंकि इससे you will remember. When I am teaching something and you are understanding the meaning of it and you are putting it in the chat, it helps you to remember it, right? हाँ, यस काजल, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी तो मतलब नीट के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट. ठीक है, उसके बाद तो देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट बुक्स. ट्रूमैन है, ये है, वो है, तो वो हम बाद में जाएंगे उस पे. As of now, Kajal, if you are aiming for a national level college, then you must go for NCERT and you can read both. आप देखेंगे कि there is not much difference. ठीक है. Now the term herbarium was coined by Piton de Tournefort in his book Elements, and the art of herbarium was started by an Italian taxonomist. This is very very important. Italy, इसके ऊपर 100% question आएगा, 100% guaranteed. Luisa Ghini, who was the person who started the art of herbarium. ठीक है, चलिए then आगे बढ़ते हैं. अभी एक हर्बेरियम का हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज नथिंग बट अ ड्राइड प्लांट that has been pasted on a sheet, and on this sheet we maintain not only the plant picture, but on this sheet we maintain the date when this herbarium was created, the date from where it was collected, a detailed classification, which means it belongs to which family, genus, species, then the ecological peculiarities, the local names and the names of the collector. जैसे कि आपका होली सैंक्टम, दैट इज तुलसी, तो तुलसी का कॉमन नेम होगा तुलसी, एंड द साइंटिफिक नेम जो भी होगा. मैग्निफेरा इंडिका, इंडियन मैंगो, है ना. सो वेरी गुड श्रीकांत, वेरी नाइस. So what all you will maintain in that sheet, and very important, this entire data should be maintained on the right corner. Right corner पे आप उसका data maintain रखोगे. ठीक है. So what all you will be including? You will be including the date, the place of collection, the detailed classification, ecological peculiarities, local names and names of the collector who collected it. ठीक है. I'll give you a website. Wait Kajal, before buying the books, you can just go to ncert.nic.in. इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा पब्लिकेशन टैब के अंदर आपके 11th 12th के PCB के बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो तो भी 700 से कम में हो जाएगा. ठीक है. देन मूविंग ऑन. So what all do you mention in the herbarium sheet? Very very important. इसके ऊपर 100% 2 marks का question आएगा. This is a 100% 2 marker question. So
you will include the date, the place of collection, detailed classification, ecological peculiarities, local names and the name of the collector. Where will you put it? You'll put it in the lower right corner. लोअर राइट कॉर्नर. ठीक है, चलिए. तो दिस इज व्हाट इज अ हर्बेरियम. इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास है बोटानिकल गार्डन. दिस इज द सेकंड टैक्सोनॉमिकल एड. सो बोटानिकल गार्डन्स आर द प्लेसेस वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज आर कलेक्टेड. बेसिकली इट्स अ गार्डन जहां पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है. दे आर टेकन केयर ऑफ एंड दे आर ग्रोन देयर. So they are collected from different parts of the world and grown in a scientific and systematic in an in vivo manner. Very very important. ये बहुत ज़्यादा important है. In vivo. Let me tell you, it is completely opposite to in vitro. It is completely opposite to in vitro. ठीक है. In vitro का मतलब होता है outside. ये है in the body. In vivo manner यानी कि सांगा ना सर कोणत्या सब्जेक्टचे क्लासेस चे टाइमिंग. ओके, सो गायत्री फॉर ग्रेड 11. गाइज प्लीज पे अटेंशन. फॉर ग्रेड 11 डेली एट 12 noon. अगर मंडे को केमिस्ट्री है तो ट्यूसडे को बायो होगा, देन वेडनेसडे को केमिस्ट्री, देन थर्सडे को बायो एंड देन फ्राइडे को केमिस्ट्री, तो सैटरडे को बायो. रिगार्डिंग मैथ्स वी विल अपडेट यू वेरी सून गायत्री. ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स का अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा. नाउ इन विवो यानी कि इन द बॉडी. प्लांट्स आर लेबल्ड विद देयर साइंटिफिक एंड कॉमन नेम. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, द ड्वार्फ बॉल्ड सिप्रिस. इसका साइंटिफिक नेम है टॉक्सिडियम डिस्टिकम, और विच मीन्स, ये यहाँ पे क्या है, इसका नाम है पेवे मिनारेट. व्हाट इज अ मिनारेट? इट इज लाइक अ पिलर. It belongs to the Cupressaceae family and it is a cultivar. That is the ecological peculiarities. So when you are writing, about the information on a botanical gardens plant, you have to mention the scientific name, the common name, the family, the genus, the species, everything. And very important is that it is grown in an in vivo manner. इसके ऊपर 1 marker question आ सकता है. Super important. इसको कट, यहां से ये इंफॉर्मेशन कट करनी है, दिमाग में कॉपी करके उसको पेस्ट कर देना है. कट, कॉपी, पेस्ट. समझे? चलिए, क्लियर है बोटानिकल गार्डन? एनी डाउट्स अबाउट इट? एनी डाउट्स अबाउट बोटानिकल गार्डन? हाँ, आई थिंक देन अजय भैया का, हाँ करेक्ट, बिकॉज 2 classes वोंट हैपन इन द सेम टाइम. ठीक है, करेक्ट, यू आर राइट. तो अजय भैया का 11 होगा. तो एक सेकेंड, बहुत कंफ्यूजन हो गया, बिकॉज एक्चुअली पहले हमने डिसाइड किया था दैट इट विल बी एट द सेम टाइम, बट देन दैट वाज 11 12. यू आर राइट. क्या नाम है आपका? टी न्यूज. ओके, so I'll just write it again. Wait, let me get a little blank space, then I'll write. Now this is again very very important information. इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, because guys remember कि जो भी आपके CET में बॉक्सेस होते हैं ना, लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे कलरफुल बॉक्सेस, वो बॉक्सेस से 100% क्वेश्चन आता है. ठीक है, वो बॉक्सेस से 100% क्वेश्चन आता है. सो इन 1543 द फर्स्ट बोटानिकल गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन इटालियन प्रोफेसर ल्यूका गिनी एट पीसा in Italy. Very very important. Botanical garden at Kew in England is known for the largest collection of more than 30,000 specimens and more than 7 million herbaria. Right? So this is very very important. Scientific name and common name. So तौसिफ, जैसे कि आपको पता है माइमोसा, तो माइमोसा का साइंटिफिक नेम है योर माइमोसा प्यूडिका, लेकिन हम उसे कॉमनली क्या बोलते हैं? टच मी नॉट या लाजाड़ू. उसी तरह से अगर हम गार्डन पी की बात करें तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम, लेकिन हम उसे कॉमनली क्या बोलते हैं? गार्डन पी. राइट? इंडियन मैंगो मैग्निफेरा इंडिका. सो द कॉमन नेम इज समथिंग विच कॉमन पीपल यूज इट एंड साइंटिफिक नेम इज समथिंग विच इज हाउ इट इज क्लासिफाइड इन द टैक्सोनॉमी. ठीक है? सो coming back guys, so this is some information about botanical gardens. Now are you guys ready for the questions? Are you guys ready for the MCQs? Quickly tell me in the chat. Are you guys ready for the MCQs? Quickly tell me in the chat. Ready for the MCQs?
आपकी काजल आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपकी एनसीईआरटी है जो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, दैट इज ओनली द टेक्स्ट बुक. आर यू गाइज रेडी फॉर द एमसीक्यूज? क्विकली टेल मी इन द चैट. जल्दी जल्दी जल्दी. यस, ओनली गायत्री इज रेडी, काजल इज रेडी. व्हाट अबाउट श्रीकांत, टी न्यूज, महेश, दर्शन, तौसिफ ready for the MCQs? Yes or no? Shrikant, very good. Darshan, very good. T News? Yes, chaliye. So let's start. First question. Taxonomy is the branch of biology that deals with study of genes, study of inheritance, classification of organisms or study of ecosystem. A, B, C or D? Jaldi bolo. Jaldi, jaldi, jaldi. A, B, C or D? You just have to write A, B, C or D in the answer. Taxonomy is the branch of biology that deals with study of genes, study of inheritance, classification of organisms और study of ecosystems. जल्दी बताइए चैट में. Quick, quick. 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is क्या है आंसर? श्रीकांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट. द आंसर इज सी. गायत्री, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द आंसर इज सी. बिकॉज सी, टैक्सो या टैक्सा का मतलब क्या हो गया? ग्रुप. आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आप इस पे फोकस करो. नॉमी यानी कि नेमिंग यानी कि क्लासिफाइंग. तो दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट गायत्री? यस. हिमांशु, आरुष, प्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. डैशिंग द पुडिंग पिकाचू, डैशिंग स्टार पुडिंग पिकाचू, क्या नाम है, बढ़िया एकदम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर? वेरी गुड प्रज्ञा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप, अबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और ऑल ऑफ द अबव. वेरी इजी, बहुत इजी आहे. फारच इजी मस्त क्वेश्चन आहे. ह्याचं उत्तर लवकरच द्यावे. चला लवकर, क्विक क्विक फेवी क्विक. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thank you, Gayatri. God bless you, dear, always. Very good, Kajal. The answer is all of the above. Very good. So these are the characteristics of living organisms. Guys, don't worry. Class के end में पूरे आज के सेशन की समरी भी मिलेगी. आज के पूरे सेशन की समरी भी मिलेगी. तो जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए, जिनको नोट चाहिए. वेरी गुड अप्पा साहेब, फार मस्त खेळले आहात तुम्ही. वेरी गुड अनिल. द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट. तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. बहुत ही बढ़िया. चलिए नेक्स्ट सवाल. अगला सवाल आ रहा है हमारे सामने. तो अगला सवाल ये रहा. An example of taxonomic aid is, what is the example of a taxonomic aid? जल्दी से बताइए, what is the example of a taxonomic aid? Herbarium, botanical garden, museum or all of the above? Quick, 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 quick. जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी. ओके. सो मेघा, हाय मेघा. मेघा ने बोला है बी, महेश ने बोला है डी, राजेश डी. ओके, बी अप्पा साहेब, महेश, तौसिफ. ओके सर, लेक्चर हमने आधी सांगून जात मज नाव कृष्णा जाधव. ओके, योर नेम इज कृष्णा, नॉट गायत्री. ओके, मस्त नाव आहे कृष्णा. ठीक है. नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो योर ऑल ऑफ द अबव. क्यों द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव? लेट मी टेल यू. सो वी आर लुकिंग एट टैक्सोनॉमिक एज. लेट्स गो बिहाइंड. ये देखिए कौन कौन से हैं टैक्सोनॉमिक एज. वी हैव गॉट हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क्स, कीज. सो ऑल दीज 6 आर द टैक्सोनॉमिकल एज. इसलिए अपनी ये जो 2 सुंदर आंखें हैं और ये जो एक बड़ा दिमाग है और ये जो 2 लंबे लंबे कान हैं, उसको खुला रखिए, हमेशा खुला रखिए. और मैं जो भी बोलता हूं उसे यहाँ पे फिट कीजिए, है ना. तो ये मैंने इतना अच्छा सुंदर आपको चित्र दिखाया था, इसको याद करके ही आपको इसका जवाब देना था.
बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु इनिशिएटेड द आर्ट ऑफ हर्बेरियम? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सर्कल पे सर्कल पे सर्कल करके आपको ये बताया था कि ये किसने इनिशिएट किया है। हु इनिशिएटेड द आर्ट ऑफ हर्बेरियम? ग्रेगर मेंडल, ल्यूसा गिनी, रॉबर्ट ब्राउन और एडवर्ड विल्सन? मेघा, डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे को हम लोग कर रहे हैं की म्यूजियम एंड ज़ूलॉजिकल पार्क्स। इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हु इनिशिएटेड द आर्ट ऑफ हर्बेरियम? Who initiated the art of herbarium? Very good आरुष, श्रीकांत। नो प्रॉब्लम, अरे सॉरी नहीं बोलना है तौसिफ, हम यहाँ पर सीखने आए हैं, आप मुझसे सीखिए, मैं आपसे सीखूंगा। वेरी गुड, फन फैक्ट विद बायो। अप्पा साहेब, प्रकाश, महेश, तौसिफ, अनिल, आरुष, हिमांशु, गायत, कृष्णा, वेरी गुड। द आंसर इज बी। ये आपने बिल्कुल सही बताया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड हर्बेरिया? Where is the world's largest collection with 30,000 specimen and more than 7 lakh herbaria? Germany, England, Italy or Switzerland? Germany, Italy, England or Switzerland? I can give you a hint, it is at the Kew Garden. The Kew Garden, it's in Germany, England, Italy or Switzerland? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer is England. It is the Kew Garden. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस क्या क्या सीखा आज हमने? वेरी गुड। आज हमने सीखा सबसे पहले दैट व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर देयर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. So it is growth, reproduction, energy requirement, death, response to stimuli, है ना, metabolism, catabolism. Remember catabolism, जहाँ पर हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा बनाते हैं, एंड एनाबॉलिज्म यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ आके बड़े बनते हैं. तो यहाँ पर एनर्जी लगती है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है. तो कैटाबॉलिज्म विल रिलीज एनर्जी, एनाबॉलिज्म विल रिक्वायर एनर्जी, एंड टुगेदर वी कॉल देम मेटाबॉलिज्म. उसी के साथ हमने देखा कि what are taxonomic aids. We also learned what is a herbarium. We spoke about how an herbarium is recorded with the sheet, and we spoke about what is botanical gardens. We learned about Lusa Guinea, and I learned a lot about all of you कि आप कहाँ से हैं, आपको क्या पसंद है और आपको कितने आंसर्स सही आए और कितने गलत आए. And guys, if you have really enjoyed this session, so make sure that you give this video a big fat thumbs up. और मार्केट में नया टीचर आया है, जाके अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट, नॉट इन द चैट. चैट तो अभी क्लास के बाद बंद हो जाएगी. कमेंट में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलो भाई. एंड हम मिलेंगे दोबारा at 12 o'clock on Thursday with 11th standard new taxonomical aids. Until then, take care of yourself. This is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from Unacademy, signing off for now. Until then, take care of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. See you soon. Bye-bye.